May I come in, sir? Please do come. Namaste, sir. Namaste. Oh. Please Thank you, sir. introduce yourself. Sir, as you know, my name is Sachin. I belong to the Churu district of our state. In terms of my academic background, I have done my schooling from Rajgarh. I graduated from Mota College, Rajgarh. I have completed my post-graduation from VMOU Kota. In terms of my achievements, I have cleared 3rd grade exam, 2nd grade exam, Rajasthan SET, NET and JRF, all in my first attempts. And I have been working as a senior teacher for the past year. Very good. Telling us something special on the sportsmen of your district. Of Churu, sir. Sir, Krishna Punya में और मिस्टर वीरेंद्र जावेरिया. कृष्ण पुनिया में की क्या उपलब्धि है? Sir, she secured a gold medal in Commonwealth Games in 2010. And she has been an MLA of our area. Sir, he is a para-Olympic javelin thrower. And he has secured, so I'm not sure about the medals he secured. I think he got 2 medals in the Tokyo Paralympics. उनकी दूरी का कुछ याद है आपको? नहीं मीटर फेंका हूँ. Sir, around 66 meters. 66. Are you sure? No, sir, no, sir. चूरू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी है? सर, वैसे तो कोई नदी नहीं बहती चूरू में, लेकिन कभी कभार कातली नदी पहुंच जाती है चूरू तक. इसको टच करते हैं. हाँ, वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है कभी कभार. चूरू जिले के सांसद कौन है? सांसद चूरू जिले के श्रीमान राहुल कसमा जी. कौन सी पार्टी? उनकी पार्टी सर पहले वो बीजेपी में थे, अभी वो कांग्रेस में. चूरू जिले की कोई ऐसी शख्सियत जो विश्व में एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानी जाती है? सब वो हमारी तहसील के हैं, राजगढ़ के लक्ष्मी निवास मित्तल जी. उनको स्टील किंग के नाम से भी जाना. स्टील किंग. उन्होंने कोई इंग्लैंड की किसी कंपनी का अधिग्रहण किया? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं. सर Okay. Lata, what do you want to become? सर, currently I want to become an assistant professor. Currently, you want to become. What do you think? IAS is better than assistant professor, or assistant professor is better than IAS? If you are given an opportunity, what would you prefer to become? Sir, I think me being present in this interview is clear indication of what I want to become. Okay. So, okay, done. No, I just want to add. And being an IAS is such a lucrative thing, such a lucrative job. You Yes, would sir. you would be offered a district and you would be managing that. Why do you want to be an assistant professor then? Sir, my personality I think is better suited for teaching. I have always wanted to. But I see that you are someone who is very good decision maker because the way you are answering, I can see that you could be a fantastic administrator. But sir, I don't think I have the right aptitude for it. You have. Okay. Why do you deserve to be an assistant professor? Sir, I think my passion for teaching, sir. You have I passion have for always wanted to be a teacher and only teacher. Okay. What would you like to do for the betterment of tribal students? Tribal students. Sir, I think tribal students might face some issue in English language. Okay. Because the English language is not very prevalent in those areas. So first I will have to make them somewhat What strategies you will adopt? strategy. Sir, making them proficient in English or teaching literature. What in both the fields? Sir, I think I will have to expose them to English language a little bit more. Okay. So The I techniques. Do you know the techniques? yes, sir. What techniques? So, will sir, you incorporate? CLT technique can be used, communicative language teaching, Okay, very good. and some movies, movie adaptations of literary works can be suggested Okay. to watch in their leisure time. And anything else? No, sir. Okay. And sir, literature can be connected to their culture. Which book you have completed recently? Recently, sir, fictional book or non-fictional book? Fictional. Anything you Or have. anything. अच्छा. Yes. You last read. अच्छा.
In the Recently? non-fiction, I read How to Live by Peter Attia. And in fiction, sir, I completed The Guide by R.K. Narayan. The Guide by Arkansas. The previous book. Can you summarize that previous book? How to Non-fiction, yes, yes. Yes, sir. In 4 lines. 4 lines. Yes. Sir, it is a book based on longevity. Uh-huh. How can we increase our health span instead of increasing our lifespan? Who is the central character? Sir, it is a non-fiction book. Non-fiction book. Yes. Okay. So, what is the gist? What is the message of that? Sir, this book talks about the various strategies we can use to increase our health span. Health And- span. Yes, sir. Okay. If I would like to reduce my 3 kg in 7 days, Yes, sir. can I do that? Although, sir, it would not be the correct way to do it because we should not rapidly lose weight. Okay. The recommended, So, how much time will it take? sir, the right duration would be, I think, 3 weeks. 1 3 kg weeks. per week should be lost. Okay. So, from literature, I would like to ask you, what is the definition of a sentence? Sir, sentence is a group of words that gives complete information. What are the kinds of sentence? Sir, there are 4 types of sentences: Mhm. assertive sentence, imperative sentence, Uh-huh. interrogative sentence, and exclamatory sentence. Give an example of an exclamatory sentence. Hooray, I have got selected as an assistant professor. Very good. Imperative sentence. What kinds of imperative sentences are there? Imperative, sir. Uh, It can be an order, yes. request. Uh, So, sir, I'm not able to think of it. okay. Command, Command. entreaty. So you see, you in your hobby section, daily running. Yes, sir. Could you tell me 2 novels which include the name run in those novels? In running. Run or running? So, one book is Born to Run. Yeah. And so, sir, I'm not able to think of it. Have you heard of Kite Runner? Yes, I am aware about the movie, but I think that was a book written by Chetan Bhagat. No. No. Anyway, so as you have been a grade 2 teacher. Yes, sir. So what significant writing, or any text which you find there, which is very significant in your, in your opinion, Yes, sir. you are teaching there? Sir, I really like the last lesson. So who wrote that? So, yes, sir, I'm not aware. So this. Anyway, so tell me, have you been in sync with literary theories? Yes, sir, I am aware. So if I say that differentiate the structuralism and the post-structuralism or deconstruction in a way, so how would you define or differentiate structuralism and deconstructionism? Sir, structuralism tells that language is made up of structures that are in oppositional relation with each other, like man, woman, rational, madman, something like that. And post-structuralism is based on the theory of structuralism. And sir, sorry, sir, I'm not So clear. Ferdinand de Saussure Yes, sir. talks about laying and Yes. parole. So how would you define both the terms? So we can take an example of a game of chess. Very good. I was about to come to that Yes, sir. analogy. So the rules and sets of rules are the length, and the specific moves we do on this game. Talk about are- that analogy. In reference to that analogy you talked about, the game of chance. How does he talk about laying and parole if it comes to the analogy of that game of chess? So I'm not sure about the. Do you know about that analogy, the game of chess he talks sir. about? So what is that? I just told you, sir. I'm not aware about. Oh, so and what is deconstructionism? So I would, sir. These Okay, are the- okay. Tell me the concept of signifier, signified. Yes, sir. Signifier is the word we use to denote to something. For example, we use bottle for this object, and the signified is the concept of this bottle that is in our mind. So the meaning which is got from that from whatever is final, or is there it is arbitrary? Is there any meaning? Arbitrary, sir. Completely arbitrary. But can we have the signified? Signified. Yes, sir. Signified. According to structuralism, can we reach to the signified?
Sir, I'm not sure. You're not sure. So What is neologism? Neologism? No, sir, I'm not aware of it. Okay, a difference between phoneme and morpheme. So phoneme is the smallest sound in language, and morpheme is, I think, the smallest unit that has some meaning in it. Okay, liberty is not a personal affair but a social contract. Who has written these things? Sorry, sir, I'm not aware of it. Okay, have you prepared anything to teach us? Yes, sir, I can teach a Go grammar ahead. topic or literature topic. what are you going to teach? So I can teach a grammar topic if you want. I can teach a literature topic. Teach a grammar topic. Teach a grammar topic. Because you are teaching there in a school, Yes, sir. so you must be teaching them. So we want to know that approach. Sir, which language should I use, bilingual or English? Whatever is comfortable to you. Okay, sir. Today we will be taking a look at an interesting grammatical topic called clauses. First we will know what it means. इसका क्या अर्थ है, ये sentences से कैसे difference है phrase में और इसमें क्या अंतर है. So clause होता है, clause में एक होता है subject and plus एक होती है verb. ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मेन यही है. सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन को क्लोज कहा जाता है. अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे. पहले तो देखेंगे फ्रेज से. फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस. सो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव सम सेंस बट इनकम्प्लीट सेंस. जैसे कि दिस चेयर, इन द कॉर्नर वी कैन से. अच्छा बताओ, क्लोज में फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, नॉन फाइनाइट? क्लोज में सर हाँ, आई एम नॉट श्योर सर. टीचर्स. हाँ, सो ये हमें सेंस तो दे रहा है लेकिन पूरी सेंस नहीं दे रहा है क्या है, क्या मतलब है इसका. लेकिन क्लोज में होता है एक सब्जेक्ट जैसा कि हमने पहले लिखा और एक होती है वर्ब. अब ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है. अगर ये कंप्लीट सेंस देता है तो वो तो होगा इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये अगर इनकम्प्लीट सेंस देता है तो वो हो गया डिपेंडेंट क्लोज. जैसे कि आई लाइक, इंडिपेंडेंट क्लोज का एग्जांपल हो गया आई लाइक टीचिंग. ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. Adverbial clause पढ़ाओ सर. We don't know, we know nothing about adverbial clause. Teach us that. ओके. सो क्लोजेस तीन टाइप के होते हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज एंड एडजेक्टिव क्लोज. ऐसे क्लोज जो एडवर्ब का कार्य करें उन्हें एडवर्बियल क्लोज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई केम टू जयपुर as soon as my mock interview was announced. अभी ये एडवर्बियल क्लोज है, ये मेन क्लोज है और ये एडवर्बियल क्लोज है. ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है. अब हम इसकी जगह कोई एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर हम इसकी जगह अर्ली भी यूज कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट क्लोज और मेन क्लोज में क्या अंतर है दोनों में? सर, इंडिपेंडेंट क्लोज किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता और पूरी सेंस देता है खुद में ही. जैसे ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, आई केम टू जयपुर, मैं जयपुर आ गया. और ये क्लोज ये इस पे डिपेंडेंट है, ये खुद में पूरी सेंस नहीं दे रहा. एक सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं ना. हाँ सर. अगर मैं राजा बन गया होता तो मैं उसे दंड दे चुका होता. इसकी इंग्लिश बनाओ. ओके सर. शुड आई राइट सर और शुड आई? You write it. Right. इसके नीचे लिखो. नहीं, मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं. जैसा व्हाट यू फील कंफर्टेबल विद. यदि मैं राजा बन गया होता सर, इफ आई वुड हैव बीन ए किंग, आई वुड हैव पनिश्ड हिम. Are you sure it is right? It is correct. Are you sure it is correct? यदि मैं एक राजा होता, ये सही इसका अर्थ ही निकला है. यदि मैं एक राजा होता तो मुझे दंड अच्छा, देता. लिटरेचर का एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाओ तो 1 मिनट के लिए. आज हम पढ़ेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोम बाय जॉन किट्स जिसका टाइटल है ओ डोने
ग्रेशियन अर्न You have only 2 minutes. Yes, you have only 2 minutes. ओडो ने ग्रेशियन अर्न इसे लिखा था जॉन किट्स ने, जो कि एक रोमांटिक राइटर्स हैं। और रोमांटिक एज का हमें पता है उस समय ज़्यादातर फोकस हुआ करता था इमोशनल एक्सप्रेशन, नेचर, सब्जेक्टिविटी। इस ओड में देखते हैं, ओड होता है किसी भी चीज़ को एड्रेस, किसे हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। ये एड्रेस हो सकता है किसी व्यक्ति को, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को, और इस केस में एक ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इसमें है ग्रेशियन अर्न, कोई चीज़ जो ग्रीस कंट्री से आती है उसे बोलते हैं ग्रेशियन। Heard memories are sweet, but those unheard are sweeter. यस सर। मायने बताएं इसके। सर इस अर्न पर कुछ चित्र हैं, उसमें कोई सिंगर जो फ्लूट प्लेयर है, फ्लूट नहीं सर, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। तो ये किड्स इमेजिन करता है कि जो मैं सुन पा रहा हूँ असलियत में वो तो स्वीट है ही, लेकिन ये उससे ज्यादा स्वीट है क्योंकि ये जो हमारी इमेजिनेशन में है। और कोई भी चीज Do you believe this philosophy? It's a fantasy. Do you believe this philosophy? I don't think so. It's यस true. सर, आई बिलीव इट। But we don't find them sweeter. We don't find them sweeter. जो हम सुनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. ज़्यादा अच्छा लगता है. Defend yourself. सर इन इमेजिनेशन ऑल द थिंग्स आर वी कैन बी परफेक्ट। Okay. सो दिस मेलोडी कैन बी परफेक्ट इन आवर इमेजिनेशन। But अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो जो केव की सिंबल है प्लेटो वाली वहाँ जा रहा है, वहाँ पर आइडियल वर्ल्ड तो होता ही नहीं है. Ideal world. Ideal world तो only exists somewhere else. How can they be perfect? This is not reality. Sir. It's a fantasy world. हम जो Sir. ivory tower में कितने दिन रह सकते हैं? फैंटेसी में सर हम परफेक्ट चीजों की इमेजिनेशन कर सकते हैं। Perfect चीजों की. क्या होता है perfect मतलब? What is Perfect perfect? कुछ होता नहीं. परफेक्ट सर विदाउट फॉल्ट्स। ऐसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट नहीं है. इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ. हाँ. हाँ, देखिए अब इमेजिनेशन तो कुछ भी कर सकते हैं, बात सही है. इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है, पर रियलिटी तो आपको फेस करनी पड़ेगी ना लाइफ में. यस सर। देन सर यू हैव टू फेस रियलिटी। बट द रियलिटी जब आप ब्रूटल लगेगा. नहीं तो क्यों नहीं, हम इमेजिनेशन को फैंटेसी वर्ल्ड में जीने से फायदा क्या है? सर मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इमेजिनेशन में ही जीना है। हाँ सर अभी हम कंपेयर कर रहे हैं रियलिटी को इमेजिनेशन को। ठीक है. रियलिटी में ऑफ कोर्स चीजों में फॉल्ट्स तो होंगे ही, हाँ. कुछ भी परफेक्ट हो ही नहीं तो सकता। हम नहीं कर पाएंगे ना. ठीक, जब हम इमेजिनेशन में रहेंगे, हम इमेजिनेशन वर्ल्ड को वही एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो रियलिटी में आना कौन चाहेगा? हाँ ये रिस्क है सर। हाँ तो ये रिस्क, बड़ा रिस्क है. आप बताइए इसको. क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन फिर? इमेजिनेशन में ही अगर कोई रहेगा, अरे मजा आ रहा है बस, है ड्रीम वर्ल्ड के अंदर रेवरी कर रहा है आदमी, है. जो किड्स का दिक्कत भी थी वैसे. हाँ हाँ सर, रेवरी करते हैं ना लोग. सर उसके रियल लाइफ काफी प्रॉब्लमेटिक थी तो उसे हाँ तो बस कंफर्ट वही के लिए उसी- सहारा लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली. एक चीज बताओ, हाँ सर। जो बात अपन कर रहे हैं तो उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसमें कैमिलियन पोइट का वो जिक्र करते हैं. सॉरी सर इसका आइडिया कैमिलियन पोइट। हाँ, कैमिलियन पोइट का जिस फिलोसफी की आप बात कर रहे हो, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट एंड ही एड्रेस्ड अ लेटर टू समवन एंड देन ही रोट अबाउट कैमिलियन पोइट. क्या है वो? सॉरी सर इसका आइडिया। आया चलिए आप मैं ये जाओ, थैंक यू। जा सकते. हाँ, इरेज इट, इट्स अ गुड हैबिट.